Okay, sir. Good morning, everyone. We will start with those questions which are already asked to us. Uh, Vanit Kumar has asked, sir, daily road running is good or not? See, this is not a very straightforward question to be answered. Let me explain why. In normal course, I would advise everybody to run on soft ground. That means grass, anywhere soft ground, mud, earth, and all that, and not tarmac or cement. Because it is easier on your legs. Because road running is taxing on your tibia, fibula, the bones which are there in your supporting your lower limb of leg below the thigh. So वहां पे strain आता है, and in training we have a lot of stress fractures. It's a very common problem in NDA, IMA, and all that. So in normal course, I would not advise anybody to run on road. But Kipchoge, who is the best runner the world has ever seen, would be doing a lot of road running because marathon competitions take place on roads only. So he has to prepare for that. And for that, if he has to run on that, he has to prepare accordingly. I have spent most of my life running on roads and hard grounds, and now also I am playing tennis primarily on hard courts because they are the ones which are available. It would be better for me to play on clay, but मिलता नहीं है clay court, hard court पे खेलते हैं, तो लगता है most better. So what we have to do is we take precautions for that. मतलब आप calf raises करिए तो strengthen your calf muscles. It is like this कि आपकी गाड़ी में shock absorber जो है अगर बेटर है सस्पेंशन सिस्टम तो झटका कम लगेगा, तो काफ मसल्स आपके स्ट्रॉन्गर है तो कम बोन पे झटका आएगा. दैट इज व्हाट यू कैन डू. आप जो है अपना नी के अराउंड के मसल स्ट्रेंथन करिए बाय डूइंग योर लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज. चेयर में बैठ के अपना रेज करो लेग को, यू नो हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू ग्राउंड कर लीजिए, उसको होल्ड करिए टाइट करके मसल को, तो दैट वे आपका अपर क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रॉन्गर होगा, तो आपके नी जॉइंट पे कम झटका आएगा. So these are some of the ways and means which you can do to strengthen the areas where stress can come on the bones of your lower leg as well as knee. But overall speaking, it is advisable to run on soft ground. That is what it is. और अगर आपके कोई issues वगैरह हैं तो alternate days कर लीजिए, that would be good. Daily करने की जरूरत नहीं. Once again, all these things depend upon the level of athlete you are. कितना आपके ट्रेनिंग का लेवल है, क्या आपका स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से प्लान करके चलना ठीक होगा. ठीक है? Yeah, thank you. Okay. Sir, Jayesh Nagar has asked, I have some questions regarding person interview and GTO. On Friday, I got conference out. Sir, one candidate did only 6 individual obstacles. He was very unfit, but he got recommended. And I did 10 out of 10. अच्छा, तो इस सवाल का जवाब तो ये है, मेरे पास ही एक स्टूडेंट था आकाश, आई थिंक योगिता मे रिमेम्बर और नॉट, काफी ओवरवेट था, एंड he went for 3 entries and he was recommended in all 3. And in his first attempt, he had done only 3 obstacles, but he was still recommended. क्योंकि ओवरऑल बंदा ठीक ठाक था, एटीट्यूड उसका अच्छा था. So this answers your first question
कि the number of obstacles a person has done will not be a decisive factor in determining कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं तो हम टेस्ट को बहुत सिंप्लीफाई कर देते, हम खाली ऑब्स्टिकल्स ही कराते और उसमें करते थे कि मतलब सबसे पहले यही कराते कि जिसने 6 या 7 ऑब्स्टिकल किए हैं उसके आगे टेस्ट लेंगे। लाइक इन द केस ऑफ रिक्रूटमेंट रैली, सबसे पहले काम आपका जो है 1 माइल का रन होता है। अब हमारे इसका लेट डाउन टाइमिंग इज 5:45। तो जो है उसमें है हमारे मेरठ वेस्टर्न यूपी बेल्ट में, तो जो 5.5 के अंदर आते हैं उनको ही लेते हैं, बाकी को तो बाहर कर देते हैं, तो उनकी टेस्टिंग ही नहीं होती। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस इन एसएसबी, तो पहली बात तो आपके जीटीओ वाला इसका सवाल का ये जवाब आपको मिल गया कि आपने 10 कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो 15 ओएलक्यू के असेसमेंट में आप जो है उससे डेफिनेटली इतने आगे हैं कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए था। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच आर बीइंग कंसिडर्ड इन मेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बाय द जीटीओ। ठीक, तो इनके जीटीओ के सवाल का जवाब मिल गया। अब आगे क्या था योगिता इनका सवाल? इसका कंपैरिजन है मैंने किससे किए और वो that's it. दैट इज इट भाई। बच्चे देखो, आप ऐसा करो, आपका सॉल्यूशन बेस्ट ये होगा, आप अभी हुए हो कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, आप नो फ्रिल्स एकेडमी में एनरोल कर लो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आई विल असेस, आई विल टेल यू एज टू व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी आर नीडिंग इम्प्रूवमेंट, और फिर उनका हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के उस पर काम करेंगे। इफ यू हैव द मोटिवेशन टू वर्क सिंसियरली एज गाइडेड, then your chances of selection will definitely increase. And No Frills Academy will be the right place, क्योंकि कोचिंग एकेडमी के 15 दिन वाले उससे आपको पता है कि उसमें कोई खास बात बन नहीं पाती है। मेजर थिंग्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उसमें। सुपरफिशियल चीजों की नॉलेज वो आपको देते हैं, they teach manipulation and all that, which is not going to work. So it makes sense कि आप हमारे सिस्टम में आके इम्प्रूव करिए, तो आपकी बात बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू। Akash Sharma is asking, sir, I was reading your book in which you gave sample stories. I think the length was short. What is expected out of us and how much length is sufficient? अच्छा, पहली बात तो ये है कि उसमें लेंथ का क्राइटेरिया कोई नहीं दिया है, आपका टाइम का क्राइटेरिया है, और टाइम आपके पास 4 मिनट है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आई टोटली एग्री that the stories which are written as samples in the book are rather short. I have deliberately done so to clarify to all the aspirants who read our book that this is the bare essential stuff to be written in the story, and other things, if you do not write, would still not be warranted, and इतने में ही आपका काम बन जाएगा और अच्छे से बन जाएगा। मतलब identification of the problem and resolution of the problem has been comprehensively covered in the stories. The aspects like कि वो कहाँ का रहने वाला था, कौन सा स्टूडेंट था, क्या कर रहा था, क्या उसकी एज वेज थी, and all those things I have not given in most of the stories, because these are not the essential aspects of the story. And अगर आप टाइम प्रेशर महसूस करते हैं, which most people tend to do, as far as the PPDT is concerned, may not be so much in TAT. Some people feel pressurized in TAT also. तो अगर इतना काम वो करेंगे
तो भी उनकी बात बन जाएगी। और स्टोरी नरेट करने में पीपीडीटी की, अगर आपने, वो तो बता रहा है मैंडेटरी चीजें ना जो शुरू की है प्रिलिमिनरी, के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज, मूड, जेंडर, वो बताकर अगर आप इतनी ही स्टोरी रखेंगे तो ये आप इसको नरेट भी कर पाएंगे 40 सेकंड्स में, ऐसी स्टोरी। एंड दैट विल बी हेल्पफुल। अगर आपने स्टोरी लिखी है लेंथ में जो कि ज्यादा है, तो वो चांसेस आर के वो नेक्स्ट बोल देगा। तो दिस इज द थिंग बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी आप इसमें डेफिनेटली शुरू की चीजें कुछ ये ऐड कर सकते हैं, तो दैट विल बी एब्सोल्युटली फाइन टू डू, फाइन। तो ये है बात। हाँ, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस पॉइंट। So this is what my explanation. Yeah, thank you. Okay, sir. Vikas Kumar is asking, sir, how to be confident if you haven't achieved much in life? नहीं, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने जिंदगी में कख नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब हम पूरे, अब आप क्रिकेट ही खेलते हैं, अगर आपने गली मोहल्ले में भी आप जो है 10-12 रन से ऊपर नहीं स्कोर कर पाए, और आपको जो है आपकी कॉलेज की टीम में बैटिंग करने भेज दिया, तो कॉन्फिडेंट कैसे हो जाओगे आप? नहीं हो सकते। तो confidence has a very direct relationship with your competence. Otherwise, having a sense of confidence would be a, in अंग्रेजी में बोलेंगे, would be a false sense of bravado. It will not be genuine confidence. तो आपको जो भी आप चीजें कर रहे हैं उनको ढंग से करना पड़ेगा, उससे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मतलब आपने स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई कर रहे हैं बेसिक एज स्टूडेंट, उन चीजों में अगर आप प्रोफिशिएंट होंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। मतलब अगर आप मैथ्स की प्रॉब्लम जो आपकी बुक में दी हैं उनको आप भरोसे से सही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तभी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आप आईआईटी एग्जाम में आप जाते हैं तो वहां पे जो है अन पहले से नहीं की हुई तरह के क्वेश्चंस भी आ गए, तो उनको भी आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस वुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट यू बीन परफॉर्मिंग इन द रूटीन क्लास वर्क। ये चीजें हैं बेटा, बिना अकम्प्लिशमेंट्स के कॉन्फिडेंस नहीं लगा सकता, achievement नहीं होगा। फाइन, तो यू हैव टू डू दैट। हल्के हल्के ये चीजें करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वन सजेशन आई वुड हैव फॉर यू इज, these are good queries of a psychological nature, और इन सब के बारे में मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ। पहले तो यही लिखा हुआ है कि ये जानो कि मैं हूं कौन, हु एम आई, and then building about self-confidence, building upon motivation, improving reasoning ability, improving willpower. All these things I have written about in my book in the personality development section. So kindly get hold of this book. It is easily available on Amazon, and read these things. Apply them. Time management की चीजें उसमें समझाई हैं अच्छे से, उनको अप्लाई करिए तो आपको लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। वेदर यू वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस और नॉट, एसएसबी आप एस्पायरेंट हैं या नहीं है, ये बुक आपको जिंदगी में डेफिनेटली बहुत मदद करेगी। थैंक यू। या Sir, Yashasvi is asking, I got conference out recently and I'm still nervous. I couldn't answer a few questions properly. Now I have started working. Do I stand better for getting recommended? means the person who's asking the question, earlier he was not a working professional, he was preparing for government exam sitting at home. Okay. So fine. So that point is totally valid, beta, that now you have started working. So
work life teaches us a lot. Practical life is a great teacher. So it is an important aspect of personality development. So by doing your work sincerely, you will develop overall as a person. डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. आप हमारी बुक में स्टोरी पढ़िएगा अजय सिंह राजपुरोहित का, कैसे वो 6 साल में उसने इंजीनियरिंग पास किया था. His academic abilities were not much. Then he worked in a restaurant and he worked sincerely there. And that is the time he joined up for my guidance program. And हमने उसके रेस्टोरेंट के काम को ही उसकी कर्म भूमि लेके चले और सिस्टमैटिकली एफर्ट्स के साथ उसकी फिटनेस जीके शीके को इम्प्रूव किया. एंड ही इज एन ऑफिसर टुडे. उससे होगा इम्प्रूवमेंट. पर फिर भी अगर आपके पास सेल्फ डाउट्स वगैरह रहते हैं और आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपके फोकस एरियाज क्या रहने चाहिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सही रोड मैप क्या है, then you can join for our guidance program. And after assessment, I'll be able to tell you very clearly that these aspects are needing improvement. And then we can create a roadmap for that. But of course, sincere effort you will have to do yourself, which will give you the desired result. Okay? Thank you. Okay. Sir, Alok Singh is asking how different a repeater and a fresher are treated by IO. Is there any difference in the set of questions asked to fresher and repeater? No. Firstly, you see, these kind of questions which you raise are not going to help you. And this information you can get easily on website, which will not be wrong. कि CIQ1 में क्या होता है, CIQ2 में क्या होता है, CIQ3 में क्या होता है. मैंने भी इसके ऊपर अपनी वेबसाइट में भी शायद लिखा है. आई थिंक बुक में भी लिखा हुआ है ना योगिता इसके ऊपर. फाइन. So it would be there. The approach of our questioning to a fresher or a repeater, there will be hardly any difference because primarily the set of questions are related to your life, the way you have led. For example, if I am interviewing an aspirant who has come to join NDA and he has probably not even finished his 12th board exams, or he has just finished his board exams and he has come for SSP, then my questioning would be around that only, those experiences. Whereas if I get from a JAG entry professional who is something like 25, 26-year-old and who has 2 years of work experience, then the kind of questions I would be asking this person would be different. It is because his life is different. I mean, जो कर रहा है वो different है एक NDA वाले aspect. So these are the major determining issues कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे. तो ये है बात. नेक्स्ट बात ये है, आप जानना चाहोगे कि एटीट्यूड में क्या डिफरेंस रहेगा असेसमेंट में फ्रेशर और रिपीटर. तो ये ध्यान से आप सुनिए. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा पर एक कुछ चीजें हैं. Let us say, for example, a person has come to me, a fresher, and I find that this person's physical fitness is not up to the mark. But I find that attitudinally the aspirant is okay, and I get an idea that he or she will be able to cope up with the training and move up and improve. So then my chances of selecting this individual are pretty high. Conversely, if the physical fitness standard of a repeater is absolutely identical to the candidate I just spoke about, and he or she had been has been attending SSBs for the past 2 years,
So he or she had a very clear idea through the individual obstacles and all that कि physical fitness का कितना relevance है और requirement क्या है एसएसबी में. अब वो उसको नहीं कर रहा है तो it is a concrete evidence that I have that this person lacks the motivation to improve in these aspects which are required. So motivation is not up to the mark. If the person is casual by nature, sense of responsibility is not up to the mark. तो ये चीजें उसमें आ जाएंगी which will impact the selection of this repeater. ठीक. तो एक और कुछ चीज आ जाती है वो ये है कि benefit of doubt in case of ambiguity may go to a fresher कि वो पहली बार आया है. But in case a doubt comes about a person, let us say, for example, the randomly, I find that the mathematical ability of an individual is suspect. I'm not saying kharab hai. Now I ask this person some questions to check his or her mathematical ability. And this person gives me an answer which is incorrect. Now, it is possible that the person may have given a wrong answer because of coming under time pressure, the pressure of stress of the interview and all that performance pressure and all that. Those things are possible. So, in such a situation, it can happen that some benefit of doubt may go to a fresher, but to a repeater it will not go because हमें पता है कि पहली बार भी इसे सेलेक्ट नहीं हुआ था. हमको ये तो नहीं मालूम कि इसकी मैथमेटिकल एबिलिटी वाज वन ऑफ द इश्यूज, बट इट कुड बी एन इशू और आपको अब एविडेंस मिल रही है कि ये इसकी अब ये एबिलिटी ठीक ठाक नहीं है. So these are some of the things, not a very big things, but which I am bringing out to explain to you the subtle difference in assessment of a fresher or a repeater. Broadly speaking, you people should not be concerned about such things. You should focus upon self-improvement. और अपने आप को आप ठीक ठाक करोगे तो चाहे फ्रेशर और रिपीटर हो आपके सिलेक्शन चांसेस सेम होंगे. It will not be a big deal. So that is what it is. It will be not very of worthwhile for you people to go into मतलब मैं बोलता रहता हूँ असेसर का बाप बनने की कोशिश मत करो कि वो क्या कर रहा है उसको अपना काम करने दो. You focus on your personal improvement. That is what is going to get you success. So one in simple case, let's say if you are a working professional, do your work well. Keep your GK good. Keep your fitness good. These are, the major issues. ये अगर ठीक ठाक है तो आपके selection chances अच्छे होंगे. Whether you are a fresher or a repeater. Thank you. Sir, Neha Tomar is asking, sir, in my first attempt, I got conference out from 12 SSB Bangalore board. Now my degree is also completed. So I will be giving SSB in a year. Not having a job or not doing a job, will it create a negative impact? देखिए इसके बारे में बहुत लिखा है. ये बार बार आता का सवाल. And I keep telling all aspirants that they should not sit idle at home because it is a concrete evidence of your sense of responsibility being of a low order towards your family as well as towards the society. You have the capability to earn your livelihood and you are not doing that. So एक तो ये बात. दूसरा जो है, when you work in the field, it is a great teacher of life. Practical life is a great teacher. So वो आप you're losing out on that. So that's also an important part of personality development.
वो घर बैठना ठीक नहीं है, आपको काम करना चाहिए, दैट विल हेल्प यू। खाली सरकारी इम्तिहान की तैयारी करते रहना, रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। Now, it may happen that despite you're trying to get a job, you're not getting a job. That possibility is there because today unemployment situation is bad because of the government's policies and poor handling of the economy. तो उसके लिए तो आप जिम्मेवार नहीं हैं क्योंकि हालत देश की खराब है। बट आपके लिए सही चीज ये होगी दैट यू मेक एफर्ट्स टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट। अब बात बनती है नहीं बनती है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो ब्रॉडली दीज आर माय सजेशंस। आप इम्पैक्ट को छोड़ दीजिए, आप अपने हाथ में है जो वो करिए। और वंस अगेन बेटा, इफ यू आर हैविंग स्टिल अनआंसर्ड क्वेरीज कि क्या किया जाए एंड ऑल दैट, then you join No Frills Academy. I will assess and then tell you what aspects are needing improvement, how they should be improved. एंड जॉब करना चाहिए, कैसा जॉब करना चाहिए, पार्ट टाइम से काम चलेगा, क्या चलेगा, ऑल दोस थिंग्स, सीइंग योर individual understanding your individual needs and the profile that you have, we will be able to evolve a roadmap which should help you improve as a person and increase your chances of selection at SSB and overall in life, career wise. Fine, thank you. Ashfaq Ahmed is asking similar question but related. Sir, I graduated in 2021. Due to some circumstances, I had to work in my family business. But I do not have any special professional experience. Will this matter in SSB? नहीं, it doesn't matter बेटा। अगर आपके घर में खेती है और आप खेती कर रहे हैं, आपका घर में दूध की डेयरी चल रही है और उसमें आप काम कर रहे हैं, आपके घर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उसमें आप लगे हुए काम कर रहे हैं, it does not matter. Work is work. It will aid your development as an individual. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके फादर की फार्मा की शॉप है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें आप काम कर रहे हैं इनफॉर्मली, दैट इज गुड इनफ। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने फादर का घर का बिजनेस छोड़ के कहीं और किसी और लाला की नौकरी करने की जरूरत है। नो, अब अंबानी का जो बेटा है, देर आर 99% chances he will work in his father's business only. So that is what it is. तो उसकी आप चिंता मत करिए, बट यू शुड वर्क, दैट इज व्हाट इट इज। फैमिली हो, आउटसाइड फैमिली हो, रिश्तेदार का हो, पेरेंट्स के दोस्त का काम हो, these things do not matter. I mean, I being from a lawyer's family, I saw a large number of my counterparts who went into this law, this thing, corporate law or criminal law and all that. They started working with their parents, uncle and things like that. That's absolutely fine. ऐसे ही मेरा क्लासमेट है, he is now a Supreme Court judge. So he started working like this only. तो उसमें कोई बात, इसका मतलब थोड़ी कि वो इनकॉम्पिटेंट है। मैं घर में ही काम करना शुरू किया था उसने, फाइन। तो अभी रिजन टू अ सुप्रीम कोर्ट जज, वैसे बिग डील, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। काम करिए, इट डजंट मैटर लोकेशन, फैमिली है कौन सा। या थैंक यू। Okay. Sir, last question we will take for now. Okay, people are asking about our coaching institute. What is, मैंने तो information provide की है वैसे. So last question we will take about NFA. What is our approach, sir? What is our Approach.
अप्रोच, ओके। देखिए, नो फ्रिल्स एकेडमी का अप्रोच जो है वो फिलॉसफी ही हमारी कोचिंग एकेडमी से डिफरेंट। कोचिंग एकेडमीज का जो है फिलॉसफी ये है कि जो है द एसएसबी प्रोसेस इज समथिंग टू बी फोकस्ड अपॉन। वो आपको उससे एक्वेंट कराते हैं कि ये स्क्रीनिंग में होगा, ये साइकोलॉजी टेस्ट में होगा, ये जीटीओ में होगा, ये इंटरव्यू में होगा, वो आपको बताते हैं। फिर आपको डेफिनेशन ओएलक्यूज की डेफिनेशन बताते हैं, वो रटवाते हैं उनको, कैसे डेवलप करना वगैरह है वो इसकी बात करते हैं, जिसमें दम नहीं होता है। हमारी फिलॉसफी ये है कि ओएलक्यूज जो है दे डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। To get through SSB, an individual does not even have to know the full form of SSB. If he or she is overall okay as a person, then the individual will get selected. So since our basic assumptions are quite different from coaching academies, our methodology of improvement is also very different. Like when you join us, the first thing happens is that you fill up a form and I interview you. After that interview, I tell you very clearly that these aspects of your personality are quite adequate and these aspects would need improvement. Thereafter, I suggest you a broad roadmap for improvement over a period of time. Then in the next step, I ask you to make a routine for yourself to effect the desired improvements. I also ask you to send me a series of psychology tests, which are very similar to what you would be writing in the SSB. Because there are some times when I get some inputs about your personality by going through your psychology test responses, which I have not inferred through talking to you in the form of the interview which I have taken. So I now include those aspects also which are needing improvement to make the assessment more comprehensive. And then you and I discuss your improvement plan. अब जो improvement plan में बन जाता है, आपका routine बन जाता है, then you are required to follow your routine and keep discussing your progress with me once every week. ये जो प्लान बना था, एग्जीक्यूशन उसका कैसे कैसे हुआ, क्या हिंड्रेंसेस आई, क्या नहीं आई, कैसे प्रोग्रेस चल रही है, कैसा इंप्रूवमेंट है, उसको मॉनिटर इस तरह से करते रहते हैं. Now, other things which are very relevant in our methodology are that we have created groups among our students which are unobserved groups. There is no supervision. And one of the students only is the group coordinator. Generally, our coordinators are of a level that I have perceived that their chances of selection are high. Like Yogita was just telling me that, I told her that Rahima got recommended. So she was saying, अरे सर आप पहले भी बोल रहे थे कि Rahima competent है, ये recommend हो जाएगी, इससे कुछ ऐसे ऐसे लिखाते हैं all that. So that is normal. This thing would happen. The coordinators would be overall competent people. And sometimes those who are not that competent, they volunteer to take on this responsibility. So they build up their leadership abilities by doing this work. And definitely improve their oral expression, ability to coordinate work, general knowledge and all that. इसमें oral expression वगैरह आपका improve होता है, GK आपका improve होता है. Now there are quite a few candidates whose English expression is weak. So I asked them to send me regularly sentences. That's the first thing we do. As things advances, we ask them to send essays also. And this is something which Yogita madam handles very deliberately. And I was just sharing with one student today morning. I said, देखो, मैंने उसको बताया कि भाई देखो तुम्हारी अंग्रेजी ठीक ठाक नहीं है, तो इसमें आपको ग्रामर और ये चीजें इंप्रूव करनी है, अपनी ग्रामर एंड वोकैबुलरी.
and you should keep sending to me 30 to 40 sentences once every week so that I can check your progress in English improvement. And I also told him that the number of people I tell this to do this action to follow, 80% of students of No Frills Academy do not follow it. They do not send regularly these sentences or essays which I ask them. And the not that good part is that 100% of these chaps who do not send these sentences or essays get recommended. 100%. The Yogita कोई नहीं recommend हो रहा जो नहीं भेजता है. And Yogita madam will testify. Quite a few of the students whose English was weak, they kept sending us sentences to her and even essays and all that, and they improved. And Yogita noticed, considerable improvement in their performance, and they got recommended also. Fine. तो फिजिकल फिटनेस का है, उसमें मैं गाइडेंस देता हूँ इंडिविजुअली आपको. वेट रिडक्शन, रनिंग एबिलिटी, स्ट्रेंथ बिल्डिंग. I provide guidance on all these issues because I have experience. And fitness guide is part of our book, The Practical Guide to Become an Officer. We do have sessions on physical fitness, one-on-one also, and as a group also. उसमें करते रहते हैं हमारे students का. They have improved their physical fitness drastically, and in some cases they have reduced weight up to 30 kgs, and that would be spread over a year or so. And other interesting thing about it that I was just trying to collate, कि कितने भाई बहन हमारे पास आए हैं. So the first I remember is in Lucknow ka boy was there, Vaibhav. He joined me for NDA. Then his younger brother Shivansh joined me also for NDA. And Vaibhav got recommended for Air Force. He's finished his training. He is an officer in the Air Force now. And Shivansh is about to pass out in this June from IMA. तो एनडीए से स्टार्ट किए, यहाँ जाके आईएमए में उनकी जर्नी पूरी हुई. कृति एक मेरी स्टूडेंट थी. she joined me, she became an officer. Her brother joined me, but his interests were elsewhere. वो आईटी सेक्टर वगैरह में चला गया, but he was my student. अभी recently Raima has got recommended. Her elder sister Ria was also our student. So and I am still in touch with not only Ria and Raima, but also in touch with their father. उनसे बातचीत होती रहती है. ऐसे ही आयुष हमारा स्टूडेंट था. he got recommended. मेडिकल उसका कुछ इशू रहा, he could not join. He's now pursuing engineering, and his father spoke to me कि अब उसका छोटा भाई भी है, वो एस्पायरेंट हो गया, उसका 12th होने वाला है. So I said ठीक है सर, उसको ले आओ, we'll get him and we'll carry on in this manner. No Frills Academy has got an ecosystem where we remain in touch over a period of time. We develop bonds. So, and I mean, people keep contacting me in their later careers and all. 3-4 साल services later. I mean, for that matter, there have been students जो मेरे brigadier हो गए हैं, they're about to become generals and all. मेरे एनडीए में थे, we remain in touch. तो No Frills Academy वाले टच में रहते हैं. उपासक मेरा स्टूडेंट था. Whenever he comes, he meets me. I mean, my first student, अभी मेरा नाम ध्यान से निकल रहा है, उपासक था. उसकी सिस्टर की शादी थी, तो I had gone and attended that. So we remain in touch, and so that kind of family thing is there in No Frills Academy. I hope I have been able to give you some idea of the way we work. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. And for more details, I have provided my office number. You Okay. get Thank you so much. more than what I am doing or not. Okay. Now, it has come from your end, so we will get a few admissions. Okay. Thank you, all of you, boys and girls. Thanks, Yogita.